Hi everyone, welcome to Sneha's classes. Today we have discussed about abiotic and biotic factor. Now let us discuss about the abiotic and biotic factor. It is included in ecology. Generally, we have discussed in ecology. Now we have discussed about briefly what is biotic and abiotic factor. Let's start. It is visible to all. Okay. Ecology. What is ecology? Or father of ecology? Father of ecology Alexander von Humboldt, and father of Indian ecology it's R. Mishra. Okay. Mycology means it's discovered the firstly term is Haeckel. Now we have discussed about the what is biotic and abiotic factor. Now, firstly, briefly discuss about the abiotic factor. In abiotic factor, uh, include the various step. We have discussed about step by step. First, firstly, discuss about the difference between climate and weather. What is climate and what is weather? We know, uh, when the in mobile and other device, the we have see the weather or weather means it is the shortly or a short or daily basis change, it is called as weather. Or climates means long term, it is the seasonable wise or long terms wise change in climates, this is called as climate. And weather means it is the shortly. Now we have discussed about the next is topographic factor. Topobac- Topographic factor means it is the particular area, or in the particular area discuss about the structure and property. Now third one is adaphic factor. Adaphic factors means it's depend on soil. It is depend on soil means various type of soil we have seen. Sandy type of soil, clay type of soil, various type of soil we have seen. Or it is depend on the climatic condition, the particular area. Okay, so it is the particular names derives the adaptive factor. Then it is climate change. In the climate change, various type of changes occur, like a light. Its light is important role in climate change. Means the it's affect the plant and animal body generally. In plant, generally sees seen the heliophytics means the light loving plants, and zeophytics means shade loving plant generally see in this area. It is the first one is the light, it is the directly impact on plant and animal. Now second one is animal. In animal, the what is the impact of light in animal? It is the changed metabolism of animal, reproduction of animal, biological clock change, also changed development, also it's a various type of changes uh, present in presence of light. Okay, now light one of the abiotic factor, it is impact on the its impact on the plant and animal. Then second one is the temperature. Temperature, it's one of the important factor in abiotic factor. It is like temperatures is divided into two types generally, endotherm and ectotherm. In temperature generally divided into two types, it's endoderms and ectoderms. In endoderms, homo means maintain the body temperatures, and it includes the generally human means environmental temperature and body temperatures does not match, it's the maintain
our body temperature. This is called as endotherm. And ectotherms means it is the change the environmental and body temperatures change was the uh, environmental factor or environmental types. Then in ectoderm, hibernation and aestivations also include this type. Number one, okay, understand a biotic factor is the climate and weather. Then topographical factor, third one is adaptive factor. Number one is climatic factor. In climatic factor includes the light. Light is impacting two things, plants and animals. Then temperature also impact the plants and animals. Okay, now third one is, now moving towards the next slide. Okay, next slide is the rainfall. Third one is the rainfall. It's also impact on the plant and animal. In rainfall, the hydrophytes hydrophytes uh, in in plants generally it's indicate the hydrophytes, and in animal it indicates the hydrocodes. In plants, mesophytes. In animal, mesocods. In plant, xerophytes. And animal, xerocods. Okay, it's a naming. It's based on the rainfall area. Okay, the high rainfall for the 12 month, generally 12 month, it is also called as the tropical rainforest. It is the ठीक ठाक वहाँ पे जो भी फॉरेस्ट एरिया ठीक ठाक रहता है. देन discontinuous rainfall, it is generally 6 month and it is called as grasslands. Also it's a ठीक ठाक रेन फॉरेस्ट रहता है और canopy also maintain. And no rainfall means it's called as deserts. Okay, in deserts, two types, divided into two types in deserts, in the cold and hot. Generally cold in night and hot in daytime. Observe it. It is the third important abiotic factor is rainfall. Then fourth one is the wind and fair. वी नो डैट्स दी, आपने देखा होगा कि जब हम माउंटेन पे जाते हैं, जब हम माउंटेन के ऊपर ऊपर जाते हैं, जैसा जैसा लेंथ अपन माउंटेन पे पहुंचने वाले रहते हैं, तो ऑक्सीजन लेवल कैसे होती है, कम. ऑक्सीजन लेवल हमको कम मिलती है, ऑक्सीजन कम मिलता है. उससे वजह से क्या होता है, कभी कभी नाक में से खून भी आ जाता है. ओके, now moving towards the our topic, it's the wind and fair. It's a topographical factor, also called as topographical factor. It's a physiographical factor. Generally जैसे कि मैंने बताया, हाई रेन ऑल्सो इम्पोर्टेंस इन द वाइन. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसा वैसा वाइन एयर का भी जो वेव्स रहते हैं वो हाई होते जाते हैं. ओके, जनरली हम देखते हैं कि नीचे के साइड में जो भी माउंटेन रहता है और जो कुछ भी माउंटेन टाइप रहता है, वहाँ पे नीचे क्या रहता है, हाई वेजिटेशन, एंड ऊपर जनरली दिखाई नहीं देता. क्यों? क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की लेवल कम है, जो भी रेनफॉल वगैरह है वो सब कुछ कम मिलता है. इसकी वजह से हमको ऊपर जनरली वेजिटेशन दिखाई नहीं देता, हमको नीचे की तरफ हाई वेजिटेशन दिखाई देता. और जो भी अल्टीट्यूड दिखाई दे रहा है वो जो भी माउंटेन का सेंटर का एरिया रहता है उल्टो अल्टीट्यूड बोलते हैं. इट्स शॉर्ट नोट्स, और वन पूछेंगे तो 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं. अभी डिपेंड ऑन दी रेन फॉरेस्ट डिवाइडेड इनटू वेरियस फॉरेस्ट. ओके, जैसे कि हिमालय रीजन, वेस्ट घाट, इट्स बिलोंग टू नागपुर. ओके, then fifth most important abiotic factor is adaptive factor, means soil.
Okay, then in soil the various type of soil. Okay, it's a classified into the particle size, pH, air, waters. Okay, then first one is sand soil. You know that the sand soil. Okay, it is the air एयर जो उसमें एयर ज़्यादा रहती है और वाटर का जो एब्जॉर्प्शन रहता है वो कम रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सॉइल. देन क्ले सॉइल इन एयर होल्डिंग कैपेसिटी लो एज़ कम्पेयर टू वाटर. वाटर कैपेसिटी कैसी रहती है ज़्यादा पर एयर कैपेसिटी कैसी रहती है कम. इन नॉर्मल सॉइल द एयर एंड वाटर बोथ आर normal ways. This is suitable for all type of vegetation. Okay, now understand abiotic factors means abiotic factor. It is the five. First one is climate change. In climate change light and temperature. अपन ने देखा कि लाइट में प्लांट और एनिमल पे कैसा इम्पैक्ट पड़ता है. देन टेम्परेचर अनुसार टेम्परेचर की वजह से क्या बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो भी देखा. इंडोडर्म एंड एक्टोडर्म. देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी थर्ड वन इज रेनफॉल. On the basis of rainfall we have divided into three types: hydrophytes, mesophytes and xerophytes. And on the basis of plant also classified. Then a fourth one is the wind and fair. It's and fifth one is the adaptive factor. Adaptive factor is the define the soil particles, particle size and nature of soil. Okay, this is a biotic factor. Now moving towards the biotic factor. Okay, next slide. Okay, देखो अभी इन बायोटिक फैक्टर. बायोटिक्स मीन्स लिविंग फैक्टर. लिविंग फैक्टर में कौन कौन आता है? ऑल लिविंग थिंग्स. अबायोटिक फैक्टर में कौन आता है? ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, हमने जैसे कि देखा है लाइट आता है, टेम्परेचर आता है, रेनफॉल्स आता है, एडापिक फैक्टर आता है. दिस ऑल इंक्लूड इन अबायोटिक फैक्टर. एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द बायोटिक फैक्टर. इन बायोटिक फैक्टर द इट इज इंक्लूड दी ऑल लिविंग थिंग्स. ओके, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, जितने भी लिविंग थिंग्स आते हैं वो किस में आते हैं? बायोटिक फैक्टर में. अभी क्या क्या आता है बायोटिक फैक्टर में? वी हैव डिस्कस इन दी डिटेल. फर्स्टली ऑटोट्रॉप्स. सेकेंड वन इज herbivorous. Third one is carnivorous. And fourth one is omnivorous and decomposer. These are the living organism. Then it's divided on the simplest way or smallest particular unit wise is divided. Okay, individual means single individual. Species mean two individual, it's called as species. और स्पीसीज को ग्रुप को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन. और पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज बायो इकोसिस. और कम्युनिटी वो बोल सकते हैं उसको. कम्युनिटी मीन्स दी वेरियस ग्रुप, वेरियस इंडिविजुअल का जो भी ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं हम? कम्युनिटी. और इकोसिस्टम क्या होता है कि पूरा इकोसिस्टम जिसमें वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी प्रेजेंट रहते हैं. ओके, अंडरस्टैंड. इंडिविजुअल मीन्स सिंगल इंडिविजुअल. जैसे कि हम, आप, म्हणजे पूरा ह्यूमन बॉडी मीन्स ह्यूमन बॉडी में कौन? मैं और आप, इंडिविजुअल. ठीक है. नेक्स्ट वन इज स्पीसीज. स्पीसीज मीन मैं, मेरा फ्रेंड, आप, आपका फ्रेंड, ये क्या हो गए? स्पीसीज हो गए. देन उसके बाद पॉपुलेशन मीन्स आपके सब फ्रेंड क्या हो गए? पॉपुलेशन. एंड देन आपके फ्रेंड के फ्रेंड ये क्या हो गए? कम्युनिटी. ओके, हमारी एक कम्युनिटी, ह्यूमन की पूरी एक कम्युनिटी बन जाती है. उसके बाद जो भी बैक्टीरिया है उसकी एक कम्युनिटी. इट इज़, मैं एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं अपन. और ऐसा होता है जनरली. हम कम्युनिटी में देख सकते हैं सोसाइटी में जाके, और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं
हम ह्यूमन बॉडी भी साथ रहते, डॉग्स भी साथ रहते, काउज भी जो साथ में रहते, ऐसे वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिटी वी हैव सी इन दिस सोसाइटी. दिस इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम. Ecosystem means various type of community involved in ecosystem. Okay, now moving towards biomes. Biomes means it is the whole universe. It is called as biomes. Okay, सॉरी, बायोम मीन्स एक ग्रासलैंड, एक बड़ा ग्रासलैंड और ओशियन रहता है. और बायोस्फीयर्स मीन होल अर्थ. इट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर. देन टुवर्ड्स द ऑर्थियोलॉजी और सिनियोलॉजी. ऑर्थियोलॉजी मीन्स स्पीसीज इकोलॉजी मीन्स इंडिविजुअल. ऑर्थियोलॉजी मीन्स उस इट्स उस नाम में ही दिखाई देता है. ऑर्थो मीन्स इंडिविजुअल और लॉजी मीन्स स्टडी. एक पर्टिकुलर स्पीसीज का हम स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्टियोलॉजी. और सिनियोकोलॉजी मीन्स ऑल ऑर्गेनिज्म का स्टडी और इंक्लूड इन दिस दी स्पेसिस बोलते हैं और कम्युनिटी हम बोल सकते हैं. उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया है और टर्मिनोलॉजी दी है, उसको हम रेफर कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं. देन इकोटोन. इकोटोन मीन्स अपन बोल सकते हैं कि लक्ष्मण रेखा. आपको लक्ष्मण रेखा मालूम है, ठीक है, तो उसको ट्रांजिशन जोन. और जैसे कि हम देख सकते हैं टू इकोलॉजी और सॉरी इकोसिस्टम, टू इकोसिस्टम जब साथ में आते हैं तो एक बीच में की जो लाइन बनती है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोटोन. अंडरस्टैंड. जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, नीचे देखा है कि लेक हैबिट और फॉरेस्ट हैबिट, दो हैबिट है और उसके बीच में जो लैंड जाता है और लैंड और ये तीन हैबिट है. अपन देखते हैं मार्शी लैंड और फॉरेस्ट, इसके बीच में से जो भी इकोटोन रहती है उसको क्या बोलते हैं हम, इकोटोन. पर्टिकुलर एरिया रहता है और वो हमको दिखाई नहीं देगा, उसमें जाके हमको दिखाई देगा. सिर्फ ध्यान में रखो कि इकोटोन क्या होता है. ओके. एज इफेक्ट. देन एज इफेक्ट किसको बोलते हैं, रिलेशन बिटवीन स्पीसीज. Then age effect means the relation between species of two boundaries. Means for example two boundaries है तो उसमें एक ओपन ऐसा जगह रहता है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि टू प्लांट्स रहते हैं और उसमें बीच में थोड़ी जगह रहती है और दिखाई देता है, उसको सवाना बोलते हैं. और रिलेशन बिटवीन टू स्पीशीज, टू बाउंड्रीज भी बोल सकते हैं. सिर्फ ध्यान में रखो, ये टर्मिनोलॉजी पूछ सकते. इकोटोन, एज इफेक्ट. Okay, now next one is techno-ecology. This is latest one is the अभी देख सकते हैं अपन कि it is impact on the our society. It is the use various type of use, generally इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल एक्सेट्रा. अपन देख सकते हैं कि मोबाइल की वजह से इकोसिस्टम पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, अपन ऑब्जर्व कर ही रहे. वैसा है, इसीलिए उन्होंने एक और टर्मिनोलॉजी ऐड किए है, टेक्नो इकोसिस्टम. ओके. अंडरस्टैंड दी व्हाट इज द अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर. ओके. नाउ आई रिवाइज द बायोटिक फैक्टर. अबायोटिक फैक्टर में क्या क्या आता है, ऑटोट्रॉफ, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, डिकम्पोजर. वी हैव know that this type of terminology. Now the in a biotic in biotic factor we have the individual. We have write about the individual, species, population, communities, ecosystem, biomes, biosphere. We have all include in the biotic factor. Then we have some ecotones, also important terminology. Age also important terminology. And newest one is the technoecology. This is all about the biotic and abiotic factor. Now ओके, दिस ओके, आपको पसंद आया होगा तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.